Hey friends, welcome you all to Navkar Digital Institute. We are going to start today the discussion on the mock test paper series 1 issued by the Institute of Chartered Accountants of India for the upcoming attempt that is November 2020. Friends, बहुत ही अच्छा MTP है और इसके अंदर जब हम देखते हैं on the MCQs तो MCQs काफी डिटेल में पूछा है इंटीग्रेटेड केस स्टडीज की मैं बात कर रहा हूं और उनके आंसर्स जो दिए वो तो शॉर्ट उन्होंने सीधे पॉइंट ही दे दिए कि भाई दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बट यस टुडे वी विल बी सीइंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो द कंप्लीट सॉल्यूशन कि हाउ you arrive at a correct answer. So that's how this video is going to be a very useful video for you all. So friends, this is as you see October 2020 की टेस्ट सीरीज है ये, right? And this is for intermediate group, new syllabus group 1. The whole paper is made up of two parts, Division A and Division B. As usual, Division A comprises of 30 marks MCQs, and in that 30 marks, we have two integrated case studies, and rest are the independent MCQs. All the MCQs of Division A are compulsory, and when we go to Division B, question 1 is compulsory, and from remaining 4, you need to attempt 3. फ्रेंड्स, ये इंस्ट्रक्शंस हर बार पढ़ना बहुत जरूरी बिकॉज कभी कभार आईसीआई ये स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है और अगर हमने इंस्ट्रक्शन पढ़े बिना अगर सीधा हमने शुरू कर दिया तो कई बार हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देंगे जिसके कारण जो मैंडेटरी अटेम्प्ट करने थे वो रह जाएंगे और आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करके आ जाओगे जैसा कभी होना चाहिए. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडे विद द पर्टिकुलर डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट. Now friends, if we take on and we start with the very first question, I have the whole mock test paper printed with me. You can also get it printed. You can download from ICI website, and along with that, you can also see the questions on the screen. Mr. Abhinav Gyan is a tech expert and one among the promoters of Doon Technology Limited, DTL. He did his engineering from one of the prestigious IIT in CSE and then pursued, he did masters in management from IIM. He started Company D 15 years back. DTL is famous for advanced technologies such as artificial intelligence, blockchain solutions and many other. Friends, आप जानते हो अभी जमाना ही टेक्नोलॉजी का आया हुआ है. Right? पहले था A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. Now it is A for artificial intelligence, B for blockchain, C for cyber security, right? D for data analytics, like this. The company went public a decade ago, but not listed. So our company is an unlisted public company. Since D is expanding its operation in wake of opportunity arises out of the industrial revolution, hence willing to retain the profits for the growth of the company, but shareholders are seeking dividend. Because for shareholders, larger the bottom line means larger the dividend. यानी कंपनी अपने भविष्य के ग्रोथ के लिए जो भी प्रॉफिट कमा रही है वो रिजर्व्स में ट्रांसफर करके ग्रोथ के लिए बचाना चाहती है. पर शेयर होल्डर्स ज्यादा डिविडेंड मांग रहे हैं बिकॉज शेयर होल्डर्स की सोच क्या है कि जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा डिविडेंड होना ही चाहिए. ओके. The outbreak of COVID-19 is another reason which forced the directors to retain the earnings. Plus, directors दो रीजन से अपने earnings को बचाना चाहते थे. एक COVID-19 के कारण, right? Because of COVID-19, and second is just let me have more lights. And second reason is that also they wanted for their future growth. After the closure of books of accounts for year 1920, director proposed the dividend of 10% against the expectation of 20% by shareholders. यानी shareholders 20% dividend मांग रहे थे, directors ने 10% दिया. But considering the extended lockdown, which causes a delay in delivering the projects, results in deferment of revenue and additional cost. तो लॉकडाउन के कारण क्या हुआ, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने में डिले होने लगा, कॉस्ट बढ़ने लगा, साथ साथ रेवेन्यू क्या हो गई, थोड़ी डेफर हो गई. ओके. Directors are of the opinion to cancel the dividend, revoke the dividend.
Shareholders seek appointment of internal auditor for audit on a concurrent basis, whereas management of DTL states that it does not require to appoint an internal auditor under the law and it will cause an unnecessary financial burden on the company. So shareholders internal auditor बिठाना चाहते हैं, directors रखना चाहते हैं. So इसके ऊपर से आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि ये इंटीग्रेटेड केस स्टडी जो है वो एक इशारा कर रहा है डिविडेंड के चैप्टर के ऊपर, चैप्टर नंबर 8. दूसरा इशारा कर रहा है अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ कंपनी, चैप्टर नंबर 9. देन दे हैव गिवन the financial information of the company for the year 2019, that is paid up share capital, turnover, outstanding loans and borrowings, outstanding deposits, including intercorporate loans of 25 crores. Plus उन्होंने बताया है कि outstanding deposits जो है उसमें से 31st January 2020 को outstanding deposit was 30 crores. Okay. Mr. Gyan, one of the shareholder of DTL Limited, यानी जो प्रमोटर भी है, नहीं, okay, out of his savings bought 40,000 shares of another company, Time Consultancy Limited, Services Limited, of face value of rupees 10 each. On such shares, the final call of rupees 2 is due, but unpaid by Mr. Gyan. Means Gyan ने और shares खरीदे जिसके ऊपर पैसे चुकाने बाकी है. In the meantime, TCS declared the dividend at a rate of 15%. Out of total dividend of INR 8.4 crore declared on 31st August 2020, INR 0.42 crores, 0.42 crores यानी 42 lakhs remain unpaid on 30th September 2020 at the end of TCS. At the end of TCS यानी कंपनी के एंगल से 42 लाख रुपीस 30 डेज हो गए, 30 सितंबर आ गया तो भी आउटस्टैंडिंग थे, यानी 30 डेज के बाद भी आउटस्टैंडिंग थे. इसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है. आउट ऑफ सच 42 crores, 12 lakhs are on account of operation of law and 3 lakhs are on account of legal disputes of right. The unpaid dividend was finally paid on 12th December in full. यानी आखिरकार 12 दिसंबर को उन्होंने सारा डिविडेंड पे कर दिया. Mr. Gyan came from humble background, hence, as a part of ethical commitment to uplift the society by promoting education to children of the economically weak section, he decided to form a Section 8 company around 2 years back with the support of fellow professionals who later become a member of such a company. Receipts are excess of expenditure, hence it was decided that Gyan Foundation will declare some dividend to its members. Okay, so उन्होंने Section 8 कंपनी खोलने की भी बात की और ज्ञान जो है वो उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहता है. Okay. अब हम क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं. The very first question is regarding unpaid call money by Mr. Gyan in the light of dividend due to him from TCS. State which of the following statements hold truth. यानी ये तीन कंपनी की बात है, कंपनी डी की बात है, DTL की बात है, कंपनी TCS की बात है और वो एक सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहते हैं उसकी बात है. सबसे पहला प्रश्न वो लोग पूछ रहे हैं कि उसके जो TCS के जो शेयर्स हैं उसके बारे में क्या कहना है. Right? First, dividend can't be adjusted against the unpaid call money. No, it is wrong. Second, the dividend of INR 48,000 can be adjusted against unpaid call money. जस्ट मिनट, पहले डिविडेंड की अमाउंट कैलकुलेट करते हैं. राइट, डिविडेंड हमेशा पेड अप वैल्यू पे किया जाता है. तो
नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ TCS कितने हैं? 40,000 शेयर्स. अनपेड 2 रुपए, तो 8 रुपए पेड अप है. तो 3,20,000 rupees is paid up capital of him. उसके 15%. Wait, let me calculate. So in short, ज्ञान को TCS में से 48,000 रुपीज मिलने वाले हैं. कैलकुलेशन ये रहा. वन का वन, राइट. The dividend of INR 48,000 can be adjusted against unpaid call money. एकदम परफेक्ट. The dividend of INR 48,000 can be adjusted against unpaid call money. सही. But if consent is given by Mr. ज्ञान, नहीं तो ये गलत. The dividend of 64,000. Oh, 64,000 is wrong. Absolutely wrong. 64,000 is absolutely wrong. ये 64,000 कैसे आए पता है फ्रेंड्स? पता नहीं कैसे लेके आए, राइट, बट दैट इज अ रॉन्ग अमाउंट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर. जो 48,000 रुपए है वो बेशक कंपनी शेयर होल्डर को पूछे बिना सीधा अनपेड कॉल मनी के सामने एडजस्ट कर सकती है. नॉट एट ऑल टू वरी, राइट. देन कम्स द सेकेंड प्रैक्टिकल. शेयर होल्डर्स की इच्छा क्या थी? इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया जाए. बट डायरेक्टर्स ने कहा कि इंटरनल ऑडिटर लॉ के मुताबिक नहीं चाहिए और हमें भी अननेसेसरी हमारे कॉस्ट को क्या करना है, कंट्रोल करना है. सो दैट्स व्हाई दे डोंट वांट एनी इंटरनल ऑडिटर. दैट्स सिनेरियो, दैट्स द पॉइंट, राइट. सो हाउ द थिंग्स विल वर्क आउट ऑन दैट. तो ये कैसे काम करेगा? ओके, पहले इंटरनल ऑडिटर के प्रोविजंस को देखते हैं. वर्किंग ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेटेड केस स्टडी का सेकेंड पॉइंट, उसकी वर्किंग क्या देखना है. एज पर सेक्शन 138, फ्रेंड्स अगर हम 138 के ऊपर जाए, विच इज विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल ऑडिट, राइट, तो दे हैव गिवन अ क्राइटेरिया. दैट क्राइटेरिया इज मेड अप ऑफ 3 parts. One is with respect to listed company, and for listed company, internal audit is mandatory. Then comes the unlisted public company. There it depends upon the criteria, and then comes even the private company. So what is the criteria? A, पब्लिक लिस्टेड कंपनी. हर एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए इट इज मैंडेटरी. सेकेंड, इफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो फिर उसके अंदर देयर आर क्राइटेरियाज, राइट. कैसे क्राइटेरिया है? 1, आउटस्टैंडिंग
deposits at any point of time during preceding financial year more than 25 means 25 minimum 25 crore rupees. Paid up capital during preceding financial year minimum 50 crore rupees. Outstanding loans and borrowings from bank and public financial institution at any point of time during preceding financial year exceeding 100 crore rupees. So it's not minimum, it's exceeding. Or turnover during preceding financial year minimum 200 crore. ये चारों में से कोई भी क्राइटेरिया हो तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा. तीसरी बात आती है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइवेट कंपनी. सो दिस प्रोविजंस आर आल्सो एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी और उसके अंदर उन्होंने कहा है 2 क्राइटेरिया रखिए. उसके अंदर they have kept 2 criteria. In case of what? In case of private. Getting? So public listed company, unlisted public company and private company. So friends, आप हमारी सिचुएशन को देखोगे तो our situation falls in unlisted public company. एंड आप देखोगे तो हमारी डिपॉजिट्स तो कंट्रोल में है, राइट. पेड अप शेयर कैपिटल है वो भी कंट्रोल में है, बिकॉज हमारा पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 45. टर्नओवर जो है वो 495 करोड़ से, यानी जो 200 किलोमीटर उससे एक्सीड कर रहा है. एंड आउटस्टैंडिंग लोन्स जो है वो 105 करोड़ है, पर उसमें से 25 करोड़ तो इंटर कॉर्पोरेट है. सो यहां पे डाउट किया जाएगा 25 करोड़ माइनस करो और अज्यूम करते के बाकी, पर वो भी फिर क्या हो जाएगा 100 करोड़ से नीचे चला जाएगा, राइट. सो मेनली हियर द क्राइटेरिया विल बी अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ व्हाट, then you can say friends it will be attracted because of
Point number C. Because turnover is more than 200 and उसके कारण ये क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा एंड कंपनी को क्या करना होगा, इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना ही पड़ेगा. इट्स बाय लॉ. With reference to declaration of dividend by Gyan Foundation, let us remind friends, Gyan Foundation is a Section 8 company. State which of the statements hold true. मैं एक भी ऑप्शन ना पढ़ूं तो भी ज्ञान फाउंडेशन बीइंग अ सेक्शन 8 कंपनी वो डिविडेंड तो डिक्लेयर कर ही नहीं सकता. सो सबसे पहला वो लोग क्या कह रहे हैं, ज्ञान फाउंडेशन कैन डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल एज वेल. सरासर गलत. ज्ञान फाउंडेशन कैन डिक्लेयर डिविडेंड ईदर आउट ऑफ द करंट ईयर्स और प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट बट नीड टू ट्रांसफर अ परसेंटेज टू रिजर्व्स. गलत. ज्ञान फाउंडेशन can't declare profit because 3 years has not expired since incorporation. Galat. Gyan Foundation cannot declare dividend in any case. That's correct answer. The reason is what? Gyan Foundation is a Section 8 company. Being Section 8 company. Then friends comes the next. What will be the amount of penalty which TCS needs to pay under Section 127 of Companies Act 2013? डायरेक्टर इन डिफॉल्ट को नहीं, कंपनी को कितनी पेनल्टी पे करनी होगी उसके बारे में उन्होंने पूछा. राइट. तो आई गिव यू टाइम टू आंसर कि कंपनी को कितनी पेनल्टी चुकानी होगी एंड फिर मैं आपको वर्किंग करके बताता हूं और उसके रिलेटेड डिटेल्स जो मेनली आपको चाहिए वो ये रही इस पैराग्राफ में दी हुई है, उसके रिलेटेड डिटेल्स. राइट. तो रिक्वेस्ट कि आप एक बार कैलकुलेट करने का ट्राई करो, फिर मैं तो बताता ही. अब देखो इसे कैलकुलेट करना सिखाता हूं, कैसे कैलकुलेट होगा. तो वर्किंग ऑफ क्वेश्चन 1 MCQ नंबर 3 उसका वर्किंग. पेनल्टी टू कंपनी इज सिंपल interest at the rate 18% per annum for default. यानी जितना डिफॉल्ट चला उसके लिए 18% कंपनी को क्या करना होगा, सिंपल इंटरेस्ट पे करना. अब देखो
डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड 31 अगस्त 2020, तो वहां से 30 डेज, लास्ट डे टू पे डिविडेंड, जो हम 30 डेज का क्राइटेरिया लेते हैं, तो कहने से 30 सितंबर तक पे हो जाना चाहिए। पर कंपनी ने पे कब किया? फाइनल पेमेंट कंप्लीट कब हुआ? 12 दिसंबर 2020 को। सो कितने दिन का डिले चला? डिले इन डेज अगर हम गिनने जाए, राइट, तो अक्टूबर के 31 डेज, नवंबर के 30 डेज, दिसंबर के 20 डेज। सो टोटल 73 डेज। 73 डेज का डिले है, राइट। नाउ अमाउंट ऑफ डिले, बिकॉज एक चीज याद रखनी है कि अगर ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण अगर आप पे नहीं कर पाते तो उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर टाइटल को एस्टैब्लिश करने में कोई डिफॉल्ट और आप पे नहीं कर पाते तो उसके ऊपर भी पेनल्टी नहीं लगती है, राइट। तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड आउटस्टैंडिंग कितना है? 42 लाख रुपीस लेस अनपेड ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, 12 lakh rupees less unpaid due to legal disputes of अधिकार राइट, कितने? 3 लाख। तो बाकी बचा कितना? 27 लाख रुपीस इज व्हाट इज देयर। तो पेनल्टी टू TCS लिमिटेड इज 27 lakh rupees, 18% for 73 days. And if we calculate, it comes INR 97,000 rupees. 200. It comes to 97,000 rupees. ये कैलकुलेशन आपको कॉपी करके रखना होगा, सो दैट लेटर ऑन अगर आप करो, पर मैं आपको बाद में टाइम देता हूं, पहले हम ये देख लेते हैं। So C is the correct answer, 97,200 rupees. So hereby we end up with the very first integrated case study. And now before we move ahead, I request you that आप लोग खाली एक पिन पेज के अंदर what we can do is this MCQs are good. You can also need to refer day before examination this MCQs, or during your revisions also you need to refer this MCQ. So what I request is
एक पिन पेज ले लो और उसके अंदर ये जो सारे वर्किंग्स मैं करवाता हूँ वो कॉपी कर लो. सो लेटर ऑन व्हेन यू प्रिंट दिस मॉक टेस्ट पेपर्स, राइट, उसके साथ ये पिन पेज क्या करना, अटैच कर देना. बिकॉज इंस्टीट्यूट के जो सजेस्टेड आंसर है उसमें खाली ऑप्शन दिए, कोई वर्किंग दिया हुआ नहीं. तो टेक अ पिन पेज, मैं जितना भी एक्स्ट्रा लिखवाता हूँ वो उसमें लिखते जा एंड स्टार्ट कॉपिंग दिस इन योर नोट. Start copying this.
सो फ्रेंड्स, आई होप यू कॉपीड इट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। एटलीस्ट आप बाकी सारे क्वेश्चंस ना करो तो चलेगा, पर ये एमसीक्यू तो डे बिफोर एग्जामिनेशन आपको वापस से एक बार देख ही लेना पड़ेगा। और जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं उनको भी एमसीक्यू की प्रिंट आउट निकाल के ये सॉल्यूशन साथ में ऐड कर देना। अब हम जाते हैं दूसरे एमसीक्यू की ओर। Right? That is with respect to Mr. Mohit Agarwal. You can see on the screen, I'm reading from the printout. Mr. Mohit Agarwal is a director of Superior Carbonates and Chemicals Limited, SCCL. SCCL was incorporated by Mr. S.K. Agarwal, father of Mohit, on 5th July 1985 as a public company. So Mohit Agarwal is the director right now, and the company was incorporated by his father. SCCL accepts a loan from Mr. Mohit, that is a director, of INR 1.5 crores for short-term purpose and expected to repay after 24 months. SCCL in its books of accounts records such receipt as loan and borrowing under non-current liabilities. At the time of giving loan, Mr. Mohit confirms in writing that amount is not being given out of the funds acquired by him by borrowing or accepting loans or deposits from others, and complete details of such loans transactions are furnished in the board report. So complete disclosure उन्होंने board report में दिया हुआ है. Company has its registered office in Paonta Sahib, Himachal Pradesh, and corporate office is situated in Dehradun, Uttarakhand. But around 15% of members whose name is entered in members register are residents of Nainital, that is Uttarakhand. At Nainital, company has liaison office, and management of company is willing to place the register of members at the Nainital liaison office. Okay. Company convenes its AGM, its 7th AGM on 10th September at its register office of company. The notice was served on 21st of August, and more than 78% of members gave consent to convening AGM at shorter notice due to confusion and possibility of another lockdown starting from 11 September 2020 on account of the second wave of COVID-19. घबराने वाली बात है ये. Okay. So, इन बेसिस पे हमें MCQs को क्या करने हैं? सॉल्व करना. तो एक चीज आप यहां पे अगर देखो तो यहां पे जो MCQ है, यहां पे जो MCQ है, एक they are talking with respect to the loan which is taken from director, and yes, by this we get a hint that whether it will be treated as a deemed deposit or not. दूसरी वो लोग बात कर रहे हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर को रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह और कोई जगह रखने के लिए. एंड तीसरी फैक्ट्स के ऊपर से जो मुझे लग रहा है, एक वो कंडोन शॉर्ट नोटिस जो है उसे कंडोन करने के बारे में हमें प्रश्न पूछ सकते हैं. अभी तक तो हमने एमसीक्यू देखे भी नहीं है, पर पैराग्राफ्स के ऊपर से ये लग रहा है. राइट, नाउ लेट अस सी द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू. With reference to loan advanced by Mr. Mohit to company, apprise whether the same is classified as deposit or not. यानी उसे डिपॉजिट की तरह क्लासिफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर हमें बातचीत करें. We need to talk on that. Right? इसके लिए let us move to some provisions. Right? मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं. Let us move to those provisions. वर्किंग फॉर MCQ 2 के अंदर फर्स्ट,
वैसे कंपनी जब भी कोई भी प्रकार के पैसे रिसीव करे बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, इट इज कंसिडर्ड एज डिपॉजिट. बट गवर्नमेंट ने आरबीआई के साथ सलाह मशवरा करके एक रूल लाया जिसके मुताबिक सर्टेन अमाउंट इज नॉट ट्रीटेड एज डिपॉजिट्स. सो as per rule 2(1)(c) of companies acceptance of deposits, rule 2014, certain amount not treated as deposit, यानी कुछ अमाउंट डिपॉजिट की तरह नहीं मानी जाए. उसमें एक खास करके पॉइंट है, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ डायरेक्टर. अमाउंट रिसीव्ड from director not treated as D dot यानी deposit. अब कंपनी अगर पब्लिक हो तो डायरेक्टर के पास से जो पैसे आते हैं वो नहीं गिने जाएंगे. एंड कंपनी अगर प्राइवेट हो तो डायरेक्टर प्लस रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, इनके पास में पैसे आते हैं, वो नॉट एज डिपॉजिट्स इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड. फर्स्ट, director furnishes to company a return declaration that the amount is not being given out of funds acquired by him by borrowing or accepting लोन्स और डिपॉजिट्स फ्रॉम अदर्स. सो एक हमें कंफर्मेशन चाहिए कि भाई उसने किसी और के पास से पैसे लेके ये लोन नहीं दिए. सेकेंड, कंपनी टू डिस्क्लोज द डिटेल्स ऑफ मनी so accepted in board report. एंड दूसरा, notes to accounts and financial statement.
तो कहने से हमारा जो सिचुएशन है, जो बात करें, तो फर्स्ट, deposit classified as deposit or not. Deposit because the sum advanced by director whether loan or otherwise is always classified as deposit. गलत, बिकॉज वो दो टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल हो रही हो तो उसे हम डिपॉजिट मानते नहीं है. दूसरा, डिपॉजिट बिकॉज द लेंथ ऑफ लोन इज ऑफ अ पीरियड मोर देन 6 months, उसका कोई लेना देना ही नहीं है. नॉट अ डिपॉजिट बिकॉज सच अमाउंट इज रिकॉर्डेड एज लोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बुक्स में कुछ भी लिखो, हमेशा वी डोंट सी प्राइमा फेसी, वी सी द ट्रू इंटेंशन ऑफ द लोन. नॉट अ डिपॉजिट बिकॉज the written declaration is provided by Mr. Mohit that the same said sum of loan is not being given out of funds acquired by him by borrowing or accepting loans or deposits from others. Right? So that's why. So in my opinion, the last is the correct answer. It will not be treated as deposit because it is not accepted out of the money borrowed, and moreover the disclosures are also being. Second is, pick the right statement regarding company's willingness to keep and maintain the register of members at नैनीताल लाइसेंस ऑफिस. एक एक करके देखते हैं उसमें से क्या आपको सही लगता है. इसको ना देखे तो भी एक बात कर ले, जो भी जगह 10% या 1/10 ऑफ मेंबर से ज्यादा रहते हो और उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दो तो आप शिफ्ट कर सकते हो. रजिस्टर ऑफ मेंबर शैल बी केप्ट एट ईदर रजिस्टर ऑफिस और सम सेम और विद इन द सेम सिटी दैट टू आफ्टर पासिंग रेजोल्यूशन. Hence, company cannot place it at Nainital license office. गलत, कंपनी कर सकती है. Register of members can be kept at any other place by company without passing an ordinary resolution. गलत. Register of member can be kept at Nainital license office after passing special resolution because more than 1/10 of total members entered in register of member reside there. सही. Register of members can be kept at Nainital license office even after passing a special resolution because minimum 1/5 का criteria है ही नहीं. Criteria किसका है? 1/10. So this is the correct option. This is the correct option. एक और लेते हैं. Considering the provision dealt with length of notice of AGM, pick the right option depicting showing validity of notice served by company. तो हमें minimum 95% की अप्रूवल चाहिए. The notice served by company is not valid because short length needs to be consented by all members entitled. गलत. Is not valid because at least 95%. ये सही है. Notice served is valid. नहीं. Notice served by company is not valid because length needed, short length need to be consented by minimum 50% members present. ये भी गलत. Main is what? Then main is 75% of members entitled to vote there. So, option number B is the correct one. Right, so this is how, friends, you can see that we discussed two integrated case studies based on MCQs. Now, before we move ahead, I would just request you that you can just copy down this working because this is important. You calculate, copy down this working in your note pin page and then we move ahead.
सो फ्रेंड्स, यहां पे हमारे दोनों इंटीग्रेटेड केस स्टडी जो थे मॉक टेस्ट पेपर के खत्म हुए। रियली फ्रेंड्स, मैंने इतना डिटेल में डिस्कशन इसलिए किया बिकॉज मैंने आपको जो पूछा था उसके अलावा बाकी सारे इंसाइट्स दिए, सो दैट इसके जैसा अगर पूछा जाता है तो आपको पता चले। तो आप बाकी सब कुछ याद रखो कि ना रखो, पर ये 2 MCQs जो है उसके प्रिंट आउट निकाल लेना और उसके साथ ये अटैच भी कर देना ये सॉल्यूशन, सो दैट आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाओगे। अब हम आगे बढ़े टुवर्ड्स नेक्स्ट। तो अब इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस की शुरुआत होगी। जिसमें द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when a copy of a contract for payment of underwriting commission is required to be delivered to ROC. First, 3 days before the delivery of prospectus for registration. Second, at the time of delivery of prospectus for registration. 3 days after the delivery of prospectus for registration, or 5 days after the delivery of. So, यहाँ registration के लिए जब आप prospectus देते हो, which is very much compulsory under section 26. उसके 3 दिन पहले, उसके 3 दिन बाद, या उसके 5 दिन के बाद, या उसी समय पे आपको देना होगा। Then this is based on section 40 read with companies prospectus and allotment of securities rules 2014 उसके ऊपर बेस्ड है, जो ये कहता है कि कंपनी जब भी आरओसी को प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रेशन के लिए देती है अंडर सेक्शन 26, उसी क्षण उसके साथ साथ एज एन अटैचमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी देनी होता है। सो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। राइट। नेक्स्ट MCQ is Prithvi Cements Limited is desirous, willing, wants to issue debentures carrying voting right. Which of the following options is best suited in such a situation? Prithvi Limited can issue debentures carrying voting right if an ordinary resolution is passed. Second, if a special resolution is passed. Third, Prithvi Cements Limited can issue debentures carrying voting right if the mortgage is lent, if it mortgages यानी keeps गिरवी land and building worth 2 times the amount of such debentures. सब गलत. Important is Prithvi Limited cannot issue debentures carrying voting right because under section 71 of Companies Act, the Companies Act specifically prohibits that debentures, bonds, deposits being credit instrument, being a part of lending and borrowing, it can never carry voting right. Voting right is only given to ownership instruments, capital instruments, whereas debentures is a debt instrument. So they cannot issue debentures carrying voting right. Which of the non-financial matter statutory auditor is required to report in his audit report? यानी जो फाइनेंशियल बात नहीं है, नॉन फाइनेंशियल है, कौन सी बात उसे रिपोर्ट करनी होगी? Whether employees appointed during the period covered by audit meet the required educational professional qualification at the time of appointment? No. Whether each page of minute book bears signature of chairman as per the provisions of Companies Act 2013? No. Whether the incorporation documents are managed properly? No. Whether any director is disqualified from being appointed as a director under section 164 subsection 2? Yes. Because अगर कोई disqualification होता है तो auditor has to specify in his report. If a company changes its name, which one of the following is most accurate? It is not allowed to use old name in any way. No, it can use it. New name should not be identical with old name. No, it can be similar. यानी कुछ words use कर सकते हैं. Old name should be painted or printed for next 1 year along with new name. No, it should be printed for next 2 years. Yeah. The correct answer is D वाला point. क्यों हम ऐसा करते हैं? बिकॉज लोगों को कंफ्यूजन ना कि अचानक से ये कौन सी कंपनी, तो लोगों को पता चले ओके ये जो कंपनी है वो नई कंपनी नहीं है, ये तो जो पुरानी कंपनी थी उसका नाम सिर्फ क्या हुआ है, चेंज. सो पीपल विल कम टू नो अबाउट द सेम.
where A obtains housing loan from LIC housing insurance, life insurance company, and if B promises to pay housing, LIC housing, in the event A failing to repay, so B is giving a guarantee on behalf of A. So whether it's a contract of indemnity, guarantee, quasi contract or contingent contract, यानी indemnity है, guarantee है, quasi है कि contingent है. As B is giving a guarantee on behalf of A, it is what? It is contract of guarantee. It is what? It is contract of guarantee. Next, A hires a carriage of B. The carriage is unsafe, though B is not aware of it and A is injured. Well, aware now, B is responsible to A for injury. B की responsibility में आ जाएगा. B is required to see the same. Ninth, dash is the cardinal. कार्डिनल का मतलब होता है primary and main. This is the cardinal rule of construction that words, sentences and phrases of a statute should be read in their ordinary, natural, grammatical meaning so that they may have effect in their widest amplitude. Amplitude यानी scope. जो चीज जैसी है वैसी की वैसी ही आपको उसे डिफाइन करनी है, तो that is with respect to which, then you can say it is with respect to rule of literal construction. So literal होगा, हार्मोनियस में एक से ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजन तो उसका साथ साथ पढ़ते हैं. बेनिफिशियल में यू ट्राई टू वाइडन द मीनिंग. एक्सेप्शनल में आप एंड को और को एंड ट्रीट करते हो. सो इट द बेस्ट इज द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट इज, you can see everything on the screen. The next is, when an act or omission constitutes an offense under two or more enactments. Enactments यानी acts. Then the offender यानी गलती करने वाला shall be liable to be prosecuted and punished under either or any of those enactments twice for the offense, either A or B at the discretion. Discretion का मतलब क्या होता है? Decision making power of court or none of this above. Any of this enactments. Right? Court नहीं आता. It's based on authority. Next is, if X bails his ornament, यानी X ने क्या किया? Ornament bail पे रखे. So it's with respect to bailment. And specifically instructs Y to keep them in bank. But Y keeps these ornaments in his own house locker along with his own ornaments. After 2 days, all the ornaments are lost or stolen in riot. Then who will be responsible for loss? अब जब X यानी कि बेलर ने बेली को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी है, तो बेली को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन का पालन करना ही पड़ेगा. अगर बेली उस स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करता है और उसके कारण अगर बेलर को कोई नुकसान जा रहा है, तो बेली इज रिस्पॉन्सिबल टू इंडेमनीफाई द सेम टू बेलर. सो X would be responsible for his loss? No. Y would be responsible for the loss to X. So Y को उस loss को indemnify करना ही पड़ेगा. Then the next is, Mr. Ilam issued a check of rupees 25,000 dated 2nd February 2020 to Mr. Gandhi, which was deposited by Mr. Gandhi on 16th March 2020 in his bank account. The said check got dishonored on 17th March by the bank, citing saying insufficient funds. Saying insufficient funds in the account of Mr. Ilam. Then Mr. Gandhi demanded the payment from Ilam by issuing a notice on 31st March 2020, which was received by Ilam on 2nd April 2020. यानी Ilam को notice 2nd April को मिली.
Assuming that Mr. Ilam failed to make the payment within stipulated time, what is the last date by which Mr. Gandhi should have made complaint in the court? चलो इसके लिए थोड़ा वर्किंग देखते हैं. Working of practical MCQ number 30. It is based for number 30. मैं बाद में आपको लिखने के लिए समय दूंगा. Date of dishonor of check. कौन से दिन चेक डिसऑनर हुआ? 17 मार्च 2020. ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. उसके बाद डेट ऑफ इश्यूइंग नोटिस. नोटिस कौन से दिन इश्यू की? 31 मार्च 2020. डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस 2nd April 2020. Now see, important is this. जिस दिन मिस्टर आइलम को ये नोटिस मिलती है वहां से डेट ऑफ पेमेंट आफ्टर नोटिस, यानी वहां से 15 डेज में पेमेंट आ जाना चाहिए. और अगर 15 डे नोटिस के देने के 15 डेज तक पेमेंट नहीं आता है तो फिर कंप्लेन टू कोर्ट. तो फिर कोर्ट को क्या करनी होगी? कंप्लेन करनी होगी. राइट. तो कंप्लेन टू कोर्ट इफ पेमेंट नॉट रिसीव. ये आप कितने दिन में कर सकते हो? इसके 30 डेज के अंदर अंदर. विद इन 30 डेज यानी कि 1 मंथ. तो फ्रेंड्स ये डेट अगर हम देखें 2nd अप्रैल वाली, तो उसके बाद के 15 दिन यानी 17 अप्रैल आएगा. अगर 17 अप्रैल तक पेमेंट ना आए तो फिर मिस्टर मिस्टर गांधी क्या कर सकते हैं? वहां से 1 महीना यानी 17 मई 2020 तक मिस्टर गांधी मिस्टर आइलम के खिलाफ ये डिसऑनर ऑफ चेक के लिए क्या कर सकते हैं? कंप्लेन कर सकते हैं. तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन में. द ऑप्शंस प्रोवाइडेड 17th May, 2nd May, 17th April, 30th April. The very first option 17th May, right? What among the following could be considered in the term immovable property as defined under section 3 clause 26 of General Clauses Act 1897? यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी चीजें आएगी? तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर हम डेफिनेशन देखें, इफ यू सी द डेफिनेशन,
which is given in section 3 clause 26 of General Clauses Act 1897. सॉल्यूशन टू लास्ट एमसीक्यू नंबर 14। तो अगर हम जनरल क्लॉजेस एक्ट की डेफिनेशन को देखें, तो जनरल क्लॉजेस एक्ट और उसमें भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को हमें क्या करना है, देखना है। सारी डेफिनेशन जो उसकी है वो खास करके आपको याद रखनी होगी। तो दिस से इट्स एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। Immovable property includes land, मीन्स जो जमीन है वो, any benefits to arise out of land. Third, things attached to land or basically earth or permanently fastened to anything, any permanently attached to anything, attached to earth। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, लैंड के इमूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन के अंदर आती है। सो बेसिकली अगर आपको तो लैंड, उसमें से मिलने वाले बेनिफिट्स और ऐसी कोई भी चीज जो अटैच्ड हो, ऐसी कोई भी चीज से जो लैंड के साथ अटैच्ड हो, तो वो सब आएगा किस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी में। द सॉइल फॉर मेकिंग ब्रिक्स, इट्स अ पार्ट ऑफ लैंड, राइट, सो ये आएगा। राइट टू कैच फिश, इट इज बेनिफिट, आएगा। राइट टू ड्रेन वाटर, यानी पानी निकालने का अधिकार, इट इज नॉट अ बेनिफिट, नहीं आएगा। डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउस आएगा। सो क्या आया, 1, 2 एंड 4, ऑप्शन 1 एंड 4 नहीं, 1, 2 एंड 4, yes, that's a correct answer. So this, sorry, so this is the correct answer to be noted. Right? So this is the MCQ, and I think so I missed out with one MCQ. Yeah, this one. MCQ number 12. With regard to contract of agency, which of the statement is incorrect? कौन सा गलत है? A person who is a major can be appointed as, can appoint minor as an agent. सही है. If an agent happens to be a person incapable of contracting, the principal cannot hold the agent liable. सही है. No consideration is necessary to create an agency. सही है. The acceptance of office by an agent is not a sufficient consideration for his appointment. ये गलत है. It's a sufficient consideration. तो हमारे सॉल्यूशन में what is the correct answer ये, because हमें क्या ढूंढना है, what is incorrect. So hereby we end up with all the portion with respect to MCQs, that is division A, which carried 30 marks. I hope you enjoyed the particular journey. Now friends, we start with division B, which carries 70 marks. Means now we are going to go on the questions other than MCQ, which includes the direct questions,
theory based questions, and also questions based on practical case studies, which will have the questions from Companies Act and also from the other laws, including the interpretation of statutes. Now friends, the very first question you see on the screen, 1A. I'm reading, read with me. OMR Limited, a subsidiary of PQR Limited, decides to give a loan of 4 lakh to its HR manager, Mr. Shyam Kumar. Means basically O company wants to give loan to its HR manager, who does not fall in the category of key managerial personnel and draws a salary of 40,000 rupees per month. And क्यों लोन देना चाहती है? To buy the partly paid up equity shares of rupees 1,000 each in O company. Examine the validity of company's decision under the provisions of Companies Act 2013. So friends, very first point here to notice, Section 67 of Companies Act will be applicable here, which says that company is allowed to give loan to its employees subject to the employee must not be a director or KMP. चलो यहाँ पे नहीं है. Second, the loan shall not exceed 6 months salary. तो 40,000 की सैलरी हो तो into 6 months तो 2,40,000 rupees. Oh, here the loan would be of, हमें कितनी देनी होगी? 5 लाख रुपए की लोन देनी होगी और पर 4 लाख की लोन दे रहे, गलत. Third, the loan must be extended for subscribing fully paid up shares. Oh, यहां भी एक glitch है. यहां पे shares कौन सा है? Partly paid. तो दो रीजन के कारण ये लोन गलत होगी. एक, C. Keeping the above facts and legal provisions in view, the decision of O Limited of granting a loan of rupees 4 lakh for purchase of partly paid up shares to HR manager is invalid due to 2 reasons. One, the loan is more than 6 months salary because 6 months salary comes to 2,40,000. And second is, it is for partly paid up shares, whereas it cannot be given for partly paid up shares. This is the thing. Coming back to question. Second question, यानी 1B के अंदर 1. Dev Pharma Limited is a manufacturing company, means Dev is a manufacturing company, and has proposed a dividend of 10% for year 1920 out of the profits of the current year. The company has earned a profit of 910 crores during the year. The company does not intend to transfer any amount of general reserves out of profit. Is Dev allowed to do so? The answer is 100% yes, friends. जब भी कोई कंपनी ने प्रॉफिट किया, it is based on section 123. जब भी कोई भी कंपनी ने प्रॉफिट किया और वो डिविडेंड देना चाहते हैं, तो रिजर्व्स में ट्रांसफर करना प्योरली ऑप्शनल है, और करना भी चाहे तो जितना वो चाहे करना चाहे, नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. सो देव लिमिटेड इज डूइंग एब्सोल्युटली व्हाट इज परफेक्ट. कुछ गलत नहीं है. लेट्स सी. Just a minute. According to section 123 of Companies Act 2013, a company may, before declaration of any dividend in any financial year, transfer such percentage of its profit. The company may, as it may consider appropriate to the reserves, and such transfer is not mandatory, and the percentage to be transferred is also at the decision-making power discretion of the company. As per the given facts, they've earned a profit of 910 crores. It has proposed a dividend of 10%, and it does not intend to transfer any amount to reserves. As per the provision stated above, the amount to be transferred to reserves out of profit is at the discretion of company acting through BOD. Therefore, it's at discretion of Dev Limited to transfer, so it is legally allowed to do so. Coming on to next question, 1B. So this is done, this is done. Now coming to this. Alpha Herbals, a Section 8 company, is intent into planning to declare dividend in AG. पहली चीज, Section 8 company dividend देना चाहती है, not possible. Mr. Chopra is holding 800 equity shares as on date.
state whether the Act of Company is according to the provisions of Companies Act 2013. Absolutely, it is not as per the requirements of Companies Act 2013. According to Section 8, the company licensed under Section 8, या जिसे आप कहते हो formation of companies with charitable object, association not for profit, right? Licensed companies, non-profit organizations are prohibited from paying any dividend to their members. Their profits are intended to be applied only in promoting the objects for which they are formed. Hence, in the instant case, the proposed act of Alpha Herbals, a Section 8 company, which is planning to declare dividend, is not according to the provisions of Companies Act 2013. यानी कंपनी सरासर जो भी कर रही है वो गलत कर रही है. कंपनी ऐसा नहीं कर सकती. Pretty simple questions, friends. So we are done up with this question also. Moving to question 1C. Mr. Arora of Delhi engaged Mr. Saini as his agent to buy a house in some area. So Arora is principal, Saini is agent. Saini bought a house for 50 lakhs in the name of a nominee and then purchased it himself for 54 lakhs. He then sold the same house to Mr. Arora at 56 lakh. Arora later on came to know the mischief of Saini and tries to recover the excess amount paid to Mr. Saini. Is he entitled to do so? The answer is yes. Because agency के अंदर जब agent principal को misguide करे, उसे बिना बताए अगर इस तरीके से पैसे लेना चाहे तो ये provisions. The problem in case is based on the provisions of Indian Contract Act as contained in section 215 read with 216. The two sections provide that where an agent without the knowledge of principal deals in the business of agency on his account, the principal may repudiate the transaction, cancel the transaction, if the case shows either that the agent has dishonestly concealed, छुपाई any material fact from him, or that the dealings of the agent has been disadvantageous to him, and apart from that, claim from the agent any benefit which has resulted to him from the transaction. So therefore, provided based on above provisions, Mr. Arora is entitled to recover 6 lakh because 50 lakh की चीज 56 लाख में बेची थी. 6 लाख का प्रॉफिट था, being the amount of profit earned by Mr. Saini out of the transaction. Then up with this. P draws a bill on Q for 10,000. Q accepts the bill. On maturity, the bill was dishonored by non-payment and P files a suit against Q for the payment of 10,000. Q proved that the bill was accepted for the value of 7,000 and as an accommodation to the plaintiff for the balance amount 3,000. Recovering the whole amount. यानी क्या P Q के पास से सारे पैसे क्या रिकवर कर पाएगा? The answer is no. कैसे? As per section 44 of Negotiable Instrument Act, when the consideration for which a person signed a promissory note or bill or check consisted of money and which was originally absent in part or subsequently paid, the sum which a holder standing in immediate relation with such signer is entitled to receive from him proportionately reduced. Okay. So on the basis of above provision, P would succeed to recover 17,000 only from Q and not the whole amount because it was accepted for the value as to 7,000 only and an accommodation to P for rupees 3,000. So साइन किया था 7,000 के लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ 7,000 ही रिकवर कर पाएंगे. Moving to the next question. 1/4 of the subscribed capital of A Limited was held by government of Rajasthan. Mr. Vikas, a chartered accountant, was appointed as an auditor of the company at the AGM by ordinary resolution.
Mr. Mukesh, a shareholder, objects to the manner of appointment of Mr. Vikas and he says that it is not acceptable. Okay. पहली चीज तो क्या ए लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है? बिकॉज अगर ए लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी ना हो तो ये अपॉइंटमेंट एकदम सही है, पर अगर ए लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी होती तो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का रोल आता। सो 1/4 शेयर कैपिटल जब राजस्थान गवर्नमेंट के पास हो, स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ए लिमिटेड इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए मिनिमम हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड, देन मिनिमम how much percentage of share capital is required, then minimum 51% of share capital is required, right? That is must, which is must. So here A Limited is not a government company, and क्योंकि A Limited is not a government company, the appointment of Mr. Vikas needs to be done in the general meeting, which is absolutely perfectly done. So Mr. Mukesh का जो objection है वो tenable यानी कि acceptable। Let's read the answer. Just read the answer on the screen. Right, friends? I give you time to read because अगर मैं कहता कि आप बाद में पढ़ लेना तो मुझे पता है कि ये आपने जो वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला उसके बाद कब आपको वापस से टाइम मिलेगा, no one knows. So everything should be done at that point of time. No delay, no postponement, no procrastination. Right? Whether a company can keep books of accounts in electronic mode? Yes, but they say accessible only outside India. No, the books should be in original form, secured form. It should be on a server. The details should be given and it should be accessible from anywhere you want. ऐसा कभी होता नहीं कि आप outside India से उसे access कर पाओ. So that is wrong. This is wrong.
So have a look at this provision between two black lines. Read it perfectly line to line. Okay. Then the next question is, Ranjit acquired a property from A company which was mortgaged with OK Bank. He settled all the dues of OK Bank in full, and the same was also registered with sub-registrar, who has noted that the mortgage was being settled. But neither the company nor bank has filed particulars of satisfaction of charge with ROC. Can Mr. Ranjit, who is the owner of the property, who bought, can intimate to ROC and seek a relief in this regard? यानी क्या जिसने शेयर्स खरीदे वो ROC के पास जाके क्या कोई प्रकार के रिलीफ मांग सकता है, उसकी बात उन्होंने की है. तो यह कम्स फ्रॉम सेक्शन 83 ऑफ कंपनीज एक्ट, जिसमें ROC के पास पावर है with respect to make entry of satisfaction of charge and release of charge even if no intimation is received from the company. पर अगर कोई और कर देता है तो बेशक वो क्या कर सकते हैं, चार्ज को डिस्चार्ज कर सकते हैं. प्लस इतना ही नहीं, वो सेटिस्फेक्शन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ चार्ज को फुल मान लेंगे एंड सामने दे विल आल्सो इश्यू अ सर्टिफिकेट इन फॉर्म CHG5 एंड देयरफॉर यहां पे रंजित कैन अप्रोच ROC, show evidence to his satisfaction that the charge has been fully settled and satisfied, and request the registrar to enter a memorandum of satisfaction noting the release of charge. So ये बेशक पॉसिबल है, यहां पे सेक्शन 83 का बेनिफिट लिया जाएगा. Let's take a minute to read the particular provision. Here it goes. Start reading it. आपको लाइन बाय लाइन रीड करना है कंप्लीटली.
scrolling ahead. Then friends, the next is Amar bailed 50 kg of high quality sugar to Srijit. So it's a case of bailment. Srijit owned a kirana shop, promising to give rupees 200 at the time of taking back the bailed goods. Srijit's employee, unaware of this, mixed the 50 kg sugar belonging to Amar with the sugar in shop and packed it for sale when Srijit was away. Later on, this came to the light only when Amar came asking for sugar he had bailed with Srijit, as the price of the specific quality of sugar had tripled. What is the remedy available to Amar under the Indian Contract Act? Obviously, जो भी नुकसान सृजित के कारण अमर को गया, फिर भले वो एम्प्लॉय का हो, for that Amar is not responsible, but Srijit has to bear the loss. Srijit has to reimburse that to Amar, and Amar has the right to recover it from Srijit. Right? Let's see. दो येलो लाइंस के बीच वाला रीड करो.
Then the next question on negotiable instruments. On a bill of exchange of rupees 1 lakh, acceptance of Mr. X was forged. A takes the bill from his customer for a value in good faith before the bill becomes payable. State the reasons whether A can be considered as HIDC and whether A can recover the amount of bill from Mr. X. तो HIDC के नियम अगर देखने जाओ तो if a person takes in good faith, then it's fine, that person becomes HIDC. But when it comes to forgery, forgery is nullity, forgery is null and void, right? Forgery waives off all the rights which are given in any act. So here as forgery is involved, Mr. A, the holder, will not be able to recover anything from Mr. X because the main thing here is what? The involvement of forgery. So that thing needs to be taken by you, care in your mind. So please rate everything below the yellow line. Start reading. So when you see the last paragraphs, third line, the true owner may sue on tort the person who has received. But this principle is universal in its character by reason whereof even a holder in due course is not exempt from it. So a holder in due course is protected when there is a defect in a title, but there is no title when there is entire absence of title, as in the case of forgery. You have the forgery method, there is entitled. So hence A cannot recover the money. Then comes the next question. A group of individuals intend to form a club named Budding Pilots Flying Club as a limited liability company to impart to give a classroom teaching and aircraft flight training to the trainee pilots. It was decided to form a limited liability company for charitable purposes under Section 8 for a period of 10 years. Thereafter, the club will be dissolved and the surplus of assets or the liabilities, if any, will be distributed amongst all its members as the normal process. Examine the feasibility, viability of the proposal and advise the promoters considering the provisions of Companies Act 2013. तो फ्रेंड्स, पहली चीज तो आप ये जो कंपनी बना रहे हो प्रॉफिट के लिए,
ये काम चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स में हो नहीं सकता। दूसरा, ये कंपनी कभी डिविडेंड दे नहीं पाएगा एंड बाद में 10 साल के बाद भी आप जब इसे बंद करने जाते हो तो इसके जो असेट्स है, जो एक्सेस हो गए लायबिलिटी के ऊपर, उसको आप कभी शेयर होल्डर में तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते, मेंबर्स में तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते। इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल द असेट्स विल बी ट्रांसफर टू अदर सेक्शन 8 कंपनी विच गवर्नमेंट डीम्स फिट। उसके बाद भी जो असेट्स बचते हैं वो बेच दिए जाएंगे, जो बेच के जो पैसे आएंगे, राइट, वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड जो है, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के मुताबिक क्रिएट किया गया है, उसमें ट्रांसफर होगा। बाकी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। सो read this much perfectly. This is your sufficient answer. Read it perfectly. Next question. The income tax authorities in the current financial year 1920 observed that the assessment proceedings during the assessment proceeding a need to reopen the accounts of Chetan Limited for 8/9 and therefore filed an application before NCLT to issue the order to Chetan Limited for reopening of its account and recasting the financial statement for financial year 2008-9. Examine the validity. Okay. Let's examine the validity. The current financial year is 2019-20. This is current financial year. तो इसके प्रीसीडिंग 8 फाइनेंशियल ईयर्स तक हम खुलवा सकते हैं। 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. सो एक बात एकदम सही कि आईटी अथॉरिटी ने एनसीएलटी को अपील की, वो एकदम सही, दैट इज परफेक्ट। बट 8-9 यानी 2008-9 तो 8 साल से भी पुराने हुए।
तो दैट कैन नॉट बी ओपन। मैक्स टू मैक्स कौन से अकाउंट्स को रीओपन और रिकास्ट करने की रिक्वेस्ट हो सकती है? अप टू फाइनेंशियल ईयर 2011-12, नॉट अर्लियर देन that needs to be taken care. So let's see the answer. Read it. Next, at the time of interpreting, what will be the effect of usage or practice? So friends, this is the direct question based on interpretation of statutes. ये हम पहले भी देख चुके हैं, इसमें कुछ नया चीज नहीं है। क्या अगर लॉ कोई चीज के ऊपर साइलेंट एंड हम उसका पालन एक तरीके से कर रहे हैं जो सही है, उसके बाद काफी सारी बार एक्ट परिवर्तित हुआ पर उसके रिलेटेड कोई परिवर्तन उसमें नहीं लाया गया। दूसरी चीज, कोई अथॉरिटी ने भी उसे गलत नहीं माना, तो इन दैट सिचुएशन वॉट एवर द प्रैक्टिस दैट इज बीइंग फॉलोड विल बी कंसिडर्ड एज परफेक्ट, दैट इज इफेक्ट ऑफ यूसेज। तो मैं यहां पे चाहूंगा कि हम एक बार पूरा ये कॉन्सेप्ट रेफर अप कर ले। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट इन डिटेल एंड वी आर शिफ्टिंग टू interpretation of statutes provisions to see that provisions in detail. So here we go with the provisions of interpretation of statutes.
जिसमें सबसे पहला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ जिसके दो मैक्सिम है। सबसे पहला ऑप्टिमा लिगम इंटरप्रेस इस्ट कॉन्स्टिट्यूटो, यानी कि अगर कोई कस्टम हो, कोई प्रथा हो और जिसका विरोध कानून करता ही ना हो, तो फिर वो प्रथा ही कानून का बेस्ट इंटरप्रिटेशन है, वो कस्टम, वो यूजेज ही कानून का बेस्ट इंटरप्रिटेशन है, ऐसा मान लिया जाएगा। मैं 2 मिनट एग्जांपल देता हूं। एंड दूसरा एक है कंटेम्प्रेनिया एक्सपोजिशियो इस्ट ऑप्टिमा इट फोर्टिसिनिया इन। यही कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप इंटरप्रिट करते हो तो वो डॉक्यूमेंट जब बना था तो उन परिस्थितियों, जिस समय वो बना था तब के हालातों के आधारित आप उस डॉक्यूमेंट को क्या करते हो, इंटरप्रिट करते हो। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं, पहले वाले का एग्जांपल लेते हैं, ऑप्टिमा लिगम इंटरप्रेस इस्ट कॉन्स्टिट्यूटो, उसका एग्जांपल लेते हैं। In one statute, it required an assessee to submit KYC documents. अब से मैं इस एग्जाम्पल में उसे केडी लिखता जाऊंगा। Statute was silent as to which documents treated as KYC document, पर एक्ट के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट्स केवाईसी माने जाएंगे उसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं था। असेसी स्टार्टेड गिविंग पैन कार्ड, जो परमानेंट अकाउंट नंबर का कार्ड होता है, पैन कार्ड एज केवाईसी डॉक्यूमेंट। Later on, statute was amended many times, but no amendment came with respect to टाइप ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट। यानी लोगों ने तो पैन कार्ड देना शुरू किया, पर उसके बाद काफी बार कानून परिवर्तित हुआ, पर एक भी बार उन परिवर्तनों में से एक भी नियम ये नहीं आया कि केवाईसी डॉक्यूमेंट में क्या देना चाहिए। इसका मतलब कानून ने पैन कार्ड को सही माना है। नो ऑथोरिटी और कोर्ट डिनाइड to accept पैन कार्ड एज केवाईसी डॉक्यूमेंट। जो एक्ट में अथॉरिटी होती है उन्होंने भी कोई मना नहीं किया, कोर्ट ने भी कभी मना नहीं किया, तो फिर पैन कार्ड फॉर दैट स्टैट्यूट shall be a valid केवाईसी डॉक्यूमेंट। तो फिर उस एक्ट के लिए पैन कार्ड क्या बन जाएगा, एक वैलिड केवाईसी डॉक्यूमेंट बन जाएगा। इसे कहते हैं इफेक्ट ऑफ यूजेज। फ्रेंड्स जस्ट इसे एक बार नोटबुक में कॉपी कर लो, जस्ट कॉपी डाउन दिस एग्जाम्पल, इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल।
राइट तो चलो इसे रीड करते हैं. ये तो जनरल मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन है. फिर ये सेकेंडरी रूल के नाम लिख देने के. सी ऑप्टिमा लिगम इंटरप्रेस ईस्ट कॉन्स्टिट्यूटिव. इसका मतलब क्या? कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रिटर ऑफ लॉ. हमारे एग्जाम्पल में कस्टम था पैन कार्ड को केवाईसी डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट करना. कंटेम्पोरेरी एक्सपोजिशन ईस्ट ऑप्टिमा इट फोर्टिसिनिया इन लीगी. इसका मतलब क्या? बेस्ट वे टू इंटरप्रेट द डॉक्यूमेंट इज टू रीड एज इट वुड हैव बीन रेड व्हेन इट वाज मेड. अब देखो ऑप्टिमा इसको यूजेज और प्रैक्टिस डेवलप्ड अंडर द स्टैट्यूट इज इंडिकेटिव ऑफ द मीनिंग रिकॉग्नाइज्ड टू इट्स वर्क बाय द कंटेम्पोरेरी ओपिनियन. A uniform practice, जैसे पैन कार्ड को केवाईसी डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट करना, was a consistent practice contained under old statute. Inaction of the law to amend the same, यानी उसके कानून काफी बार परिवर्तित हुआ पर कुछ नहीं हुआ, are important factors to show that the practice so followed was based on the correct understanding of the law. Moreover, when the usage or practice receives judicial or legislative intent, यानी कोई विरोध नहीं हुआ ना अथॉरिटी के द्वारा ना जुडिशियल कोर्ट के द्वारा, अप्रूव्स इट्स एन एडिशनल वेट. द बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट और एनी डॉक्यूमेंट इज दैट which has been made by contemporary authority. Statutes and documents should be interpreted as they would have been at the time when they were enacted or written. ये जो एग्जाम्पल है इसको आपको क्या करना है, ये वाला एग्जाम्पल लर्न बाय. आप एग्जाम में कोई भी एक लिखना, या तो पैन कार्ड वाला लिखना है या ये लिखना, पर इसको खाली लर्न कर लेना. ये पता नहीं चलेगा बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 एंड सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 comes in your CA final, not here. Right, so hereby we end up with the first secondary rule. That is effect of usage. I hope you thoroughly enjoyed that particular part of the session, which we discussed in a normal routine session. So now we move back to read the provisions from the answers. So I request you to read this from here.
Moving to next question. MNP Private Limited, a company registered under Companies Act 2013 with a paid up capital of 45 lakhs and a turnover of 3 crores. Explain the meaning of small company and examine the following. Whether MNP can avail the status of small company, and what would be your answer if the turnover of the company is 1.5 crores? So presently not, but if the turnover comes to 1.5 crores, then the answer is yes. So see, small company definition, the paid up capital should be up to 50 lakh, 45 लेके चलेगा, and turnover जो है does not exceed 2 crores. But in our question, it was more. So that's why it cannot avail the status of small company. But yeah, if the turnover is 1.5 crore, then yes, it can avail the status of small company. So I request you to read this in detail. Moving to next question. Bazaar Limited called its AGM in order to lay down the financial statements for shareholders' approval, but due to lack of quorum, the meeting was cancelled. The directors did not file annual return with ROC. The directors were of idea that the time for filing annual return with ROC is from the date of AGM would not apply as the AGM was cancelled. Has the company contravened and will the company be penalized? Yes. Even if the AGM is cancelled, from that day, within 60 days, right, the financial statement needs to be filed, though unadopted. And then when they are being adopted, whenever they are being adopted, then the adopted version needs to be filed. So here, absolutely the directors have done a mistake. They will be liable for the penalty. So let's go on section 137, or you can say section 92 with respect to annual return. So basically, this is with, okay, financial statement की बात की. अब similar तरीके से section 92 है, जो annual return की बात करता है, जो कहता है कि भाई AGM cancel हुई, पर वहां से 60 days के अंदर आता है, आपको annual return तो भर देना ही पड़ेगा. So have a look at this. Annual return 92, financial statement section 137.
afterwards, friends, next. As per the provisions of Companies Act 2013, जिसमें section 203 ये बताता है क्या? A whole-time KMP should not hold office in more than one company except its subsidiary company at the same time. Referring to section 13 of General Clauses Act 1897, examine whether a whole-time KMP can be appointed in more than one subsidiary. So here the provision will come something like this, not of Companies Act, but you can say of General Clauses Act. It says that whenever any reference is given to singular thing includes plural until any repugnant, any contrary view is given specifically. So यहाँ पे subsidiary company लिखा है, तो subsidiary company means what subsidiaries. So वो एक से ज्यादा में भी बन सकता है, पर वो subsidiaries होनी चाहिए. So see, read between these two black lines. Then the next question is with respect to explain Mischief rule for interpretation of statute. Also give the four matters it considers in construing, understanding an act. तो Mischief rule ये था कि जब आप कोई कानून के अंदर कोई वर्ड का मिसयूज करके, मिसचीफ करके उसके इंटेंशन को डिफीट करना चाहते हो, तो कानून हैज अ पावर दैट वो उस वर्ड का एक्सटेंसिव इलैबोरेटिव मीनिंग लेके आपको वो सही नियमों का पालन करवाए. तो अगेन फ्रेंड्स, interpretation being a very crucial portion, let us see this Mischief rule part lecture so that our revision takes place, because this is very, very, very important. So let's go to the lecture of rule of Mischief. बेनिफिशियल या दूसरा है या फिर उसे
इसे मिस्चीफ रूल भी कहा जाता है, या फिर इसे हिडन रूल भी कहा जाता है। दिस इज ए कैटेगरी। इसे क्यों कई बार फ्रेंड्स हिडन रूल कहा जाता है, तो ये वेल एस्टैब्लिश हुआ था हिडन्स के केस में, तो इसे हिडन रूल कहा जाता है। जैसे देयर इज रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, राइट, पर कई बार रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को तुर्कन रूल भी कहा जाता है, बिकॉज रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कन में उसे एस्टैब्लिश किया गया था। तो उस प्रकार से इसके 4 अलग अलग नाम है। अब इसके 2 इंटरप्रिटेशन निकलते हैं, इसके 2 अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकलते हैं। इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? इफ स्टैट्यूट सेज शॉर्ट में लिखे तो compliance done by other on behalf of someone is valid। इसके लिए वो वर्ड्स यूज करते हैं क्वी फेसिट पर एलियम, फेसिट पर से, क्वी फेसिट पर एलियम। फेसिट पर से, इसका सिंपल सा मतलब क्या फ्रेंड्स? अगर एक्ट में लिखा है कि कंप्लायंस इज टू बी डन बाय बॉयज, पर गर्ल्स अगर कंप्लायंस करती है बॉयज की परमिशन लेने के बाद, यानी बॉयज के बिहाफ पे, तो बॉयज ने ही वैलिड कंप्लायंस किया ऐसा मान लिया जाएगा। या फिर आप दूसरा इंटरप्रिटेशन ये भी होगा इसका कि अगर कोई एक्ट में ऐसा लिखा हो कि बॉयज ही कंप्लायंस कर सकते हैं, तो इन दैट सिचुएशन नो वन एल्स कैन डू। पर अगर ऐसा ना लिखा हो तो कंप्लायंस एक को करना हो, पर उसकी अथॉरिटी के साथ अगर उसके बिहाफ पे दूसरा कोई कंप्लाई करता है तो पहले वाले ने कंप्लाई किया है ऐसा मान लिया जाएगा। दैट इज क्वी फेसिट पर एलियम, फेसिट पर से, क्वी फेसिट पर एलियम, फेसिट पर से, ये उसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, राइट। दूसरा फ्रेंड्स मिस्चीफ रूल का ये भी एक कॉन्सेप्ट है। if some mischief यानी नॉन कंप्लायंस is found in statutes implementation, the words of statute shall have expanded meaning फॉर बेनिफिट ऑफ स्टैट्यूट। यानी जब कोई विपरीत परिस्थिति हो, उस विपरीत परिस्थिति को दूर करने के लिए जब कोई कानून को बनाया जाए, पर उस कानून के बनने के बाद भी वो विपरीत परिस्थिति तो वैसे की वैसी ही रहती है। क्यों? बिकॉज लोग उसके कोई वर्ड का मजाक बना देते हैं। तो उस स्टैट्यूट के हित के लिए, उस गलत काम को स्टॉप करने के लिए कोर्ट हैज द पावर टू गिव अ वाइड मीनिंग टू दैट पर्टिकुलर वर्ड्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। पहले इतना कॉपी करो, फिर मैं आपको इसको एग्जाम्पल के साथ पूरा समझाता हूं। आई एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल।
जस्ट पहले खाली इतना कॉपी करो। मैं आपको एक पूरा एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। लिखा। अब ये लिखो, देखो दिस इज ए कैटेगरी, मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन कॉमन, प्राइमरी रूल्स का लिस्ट बनाएंगे कॉमन। उसमें फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। ये पैराग्राफ पूरा नोटबुक में कॉपी करो। लिखा फ्रेंड्स? फिर ये लिखो, तो फिर मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं एग्जाम्पल के साथ। अब ये क्या कहता है फ्रेंड्स? इसे समझते हैं ड्राइंग से। कोई कानून नहीं था तब, क्या था? एक स्ट्रीट थी जहां पे ऐसे स्ट्रीट के ऊपर
प्रोस्टिट्यूट्स खड़ी रहती थी, जो वेश्या होती है वो प्रोस्टिट्यूट्स खड़ी रहती थी। हमें इस एग्जाम्पल को एक ब्रॉड माइंड से, अच्छे पर्सपेक्टिव से समझना। फिर होता क्या था, जो पासर बाइज होते थे, पी यानी प्रोस्टिट्यूट, एक्स यानी पासर, यानी जो रोड पे चलते थे, ये प्रोस्टिट्यूट्स उन्हें टच करके और ऐसा सब करके उन्हें गलत तरीके से परेशान करती थी। इसलिए सारे पासर्स बाइज कंफ्यूज थे, बहुत चिंतित थे। उन्होंने गवर्नमेंट को कंप्लेन की एंड गवर्नमेंट ने एक नया कानून पास किया, स्ट्रीट एक्ट, एंड फिर कह दिया कि प्रोस्टिट्यूट्स जो है वो स्ट्रीट के ऊपर नहीं खड़ी रह सकती। तो अब प्रोस्टिट्यूट्स ने क्या करना शुरू किया, जो बिल्डिंग हो, बिल्डिंग की बालकनी में खड़ी रह गए, या बिल्डिंग की विंडो में खड़ी रह गई, या बिल्डिंग का जो कंपाउंड वॉल था ना, जो कंपाउंड वॉल स्ट्रीट को एंड कंपाउंड को बाइफरकेट करता था, तो उस कंपाउंड वॉल को एकदम छोटी करवा दी। सो अब वो खड़े रहते हैं सच कंपाउंड वॉल में, पर वो सब कुछ कर सकते जो वो स्ट्रीट में खड़े रह के कर सकते थे। तो हुआ क्या, कानून के आने के बाद भी जो नेगेटिव सिचुएशन थी, जो तकलीफ थी, जिसे दूर करने के लिए कानून लाया गया था, वो कानून का पर्पस सर्व नहीं हुआ। तो कोर्ट ने खास करके एक्ट के हित के लिए, एक्ट के बेनिफिट के लिए, एक्ट का पर्पस फुलफिल हो, इसलिए कोर्ट ने कहा कि ये तो स्ट्रीट है ही, पर कंपाउंड एरिया इज स्ट्रीट, बालकनी इज स्ट्रीट, विंडो इज स्ट्रीट। यानी इन शॉर्ट, प्रोस्टिट्यूट जहां कहीं भी खड़ी रह के या खड़े रह के किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, वो सारी चीजों को उन्होंने क्या कर दिया, स्ट्रीट में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज टू गिव द एक्सटेंडेड मीनिंग। कोई भी नॉर्मल मतलब क्या होता है, स्ट्रीट यानी रोड, पर यहां पे इस एक्ट में पर्पस को अचीव करने के लिए, लॉ के बेनिफिट के लिए उन्होंने एक एक्सटेंडेड मतलब दिया, राइट, एंड उसको उन्होंने क्या ट्रीट किया, दैट इट विल बी ट्रीटेड एज स्ट्रीट। चलो इसे समझते हैं। सी, जस्ट रीड दिस। जस्ट इसे एक बार खाली रीड करो, ये वो हमारा वाला एग्जाम्पल है। गेटिंग? अब कब इसे अप्लाई नहीं कर सकते, व्हेन क्लियर वर्ड्स आर यूज्ड इन स्टैट्यूट, तब हमें इसे अप्लाई नहीं करना है। दूसरा कब अप्लाई नहीं करना है, इन फिस्कल रेवेन्यू स्टैट्यूट्स लाइक टैक्सेशन लॉ, जनरली वी डोंट अप्लाई। सो फ्रेंड्स, यहां पे एक चीज और क्या ध्यान रखनी है, जब आप ये हार्मोनियस बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन करते हो, तो हमें क्या ध्यान में रखना है, व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड इन स्टैट्यूट इज कैपेबल ऑफ मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, द रूल एनेबल्स कंसिडरेशन ऑफ 4 मैटर्स इन कंस्ट्रूइंग एन एक्ट। यानी कोई चीज को समझने की 4 चीज। व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग एन एक्ट, ये जो स्ट्रीट एक्ट आया उसके पहले क्या कानून था, तो कोई नहीं था। व्हाट वाज द मिस्चीफ और डिफीट फॉर विच द लॉ डिड नॉट प्रोवाइडेड, यानी कानून बना पर उसके अंदर किस चीज के बारे में नहीं बताया था, तो कि स्ट्रीट पे खड़े रहो तो पकड़े जाओगे, पर कंपाउंड में खड़े रहो, बालकनी में खड़े रहो, विंडो में खड़े रहो तो नहीं पकड़े, तो उसके बारे में नहीं बताया था। व्हाट इज द रेमेडी दैट हैज बीन प्रोवाइडेड, स्ट्रीट पे नहीं खड़ी सकते। व्हाट इज द रीजन फॉर द रेमेडी, सो दैट प्रोस्टिट्यूट्स पासर बाय को परेशान ना करें। तो ये 4 चीजों को ध्यान में लो। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, कोर्ट ने क्या कहा कि बालकनी में खड़े रह सकते हैं, ऐसा एक्ट में लिखा है, पर उससे पर्पस फुलफिल नहीं होता, तो बालकनी में भी खड़े नहीं रह सकते, यानी बालकनी विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रीट।
So the rule then orders that court must adopt that understanding which shall suppress yani reduce the mischief yani ki problem and advance yani ki give the remedy. So this is, friends, you can say the fourth rule we understood, that is rule of what? Harmonious, no, rule of what? Beneficial construction. So friends, hope you understood and revised and recap the whole mischief rule provision. Friends, interpretation बहुत important है. That's why जहां जहां interpretation की बात आती है मैं आपको original rules सीधे original complete rules revise करवा देता हूं so that it will always be beneficial to you. So now let's read this answer from this MTP also, what they were given with respect to the rule of mischief. Read this much. Then the next. XYZ, a 1% company, was incorporated during 1718 with an authorized capital of 45 lakh rupees consisting of 4.5 lakh shares of rupees 10 each. The capital was fully subscribed and paid up. Moreover, the turn of 1718 and 1819 is 2 crores and 2.5 crores respectively. Promoter seeks your advice that whether they can convert into any other type of company in 1920 and what are the circumstances.
if the promoter increases the paid up capital of company by 10 lakhs during 1920, तो अगर ये 10 लाख से इंक्रीज होगी तो 45 लाख से 55 लाख हो जाए, and if it exceeds 50 lakh, then in that situation within 6 months compulsorily it needs to convert into either the public company with 7 members and 3 directors or private company with minimum 2 members and minimum 2 directors. Second is, if the turnover of company during 1920 was 3 crores, अगर ऐसा हो तो 3 साल का टर्नओवर हो 2 crores 2.5 crores, so it comes to 4.5 crores plus 3 crores 7.5 crores divided by 3. जो कुछ भी आता है क्या वो 2 करोड़ से ज्यादा है? Obviously yes. In that situation also within 6 months the company has to compulsorily get itself converted into option. What? प्राइवेट कंपनी भी कन्वर्ट हो सकती है, पर कैसी प्राइवेट कंपनी? वैसे तो ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी है, पर वो कैसी प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए? मिनिमम 2 मेंबर मिनिमम 2 डायरेक्टर वाली, या फिर पब्लिक कंपनी? कैसी पब्लिक कंपनी? मिनिमम 7 मेंबर्स मिनिमम 3 डायरेक्टर्स. लेट्स लुक एट द आंसर. Next question. ABC Limited created a charge in favor of bank. The charge was duly registered. Later on, bank enhanced the facility by another 20 crores. But due to inadvertence, due to accident, due to mistake, this modification in the original charge was not registered. Advise the company of the course of action which can be pursued. The missed out with modification, the best is
Apply to ROC for rectification of the register of charge. Apply, inform CHGA, and the needful will be done. No need to worry. Very simple provision. Just you'll read it, you'll get an idea. Nothing more to discuss on this. Just read this much. So now moving towards the last few questions. Second last question. Mr. D was in urgent need of money amounting to 5 lakh. He asked Mr. K for the money. Mr. K ने Mr. D को money दिए on the surety of A, B and N without any contract between them in case of default in repayment to Mr. D to K. तो D अगर K को पैसे, K ने D को पैसे दिए and on a surety कि A, B and N अगर पैसे चुकाएंगे, अगर D पैसे ना चुकाए, D makes a default in payment. D ने default किया, B refused to contribute. Whether B can escape the liability, then the answer is absolutely no. When there are co-sureties, joint sureties, co-sureties, right? Every surety is responsible equally in their or in a proportion, and there is no need to have any mutual agreement between them. So here B cannot escape the liability. B will be liable for his particular portion. You read this.
And hereby we go with the last question of this mock test. And it's a very simple of General Clauses Act. Repeal of provision is different from deletion of provision. Absolutely. Explain with the help of General Clauses Act. So hereby we go. Absolutely both are different. So repeal of provision is in distinction from deletion of provision. Repeal generally brings about complete obliteration, abolition of the provision as if it never existed, thereby affecting all incoherent rights and all causes of action related to the repeal provision. यानी सब कुछ खत्म हो जाएगा. While deletion ordinarily takes effect from the date of legislature affecting the state deletion, never to effect the total effecting or wiping of provision as if never existed. So prospective effect होगा, retrospective सारी चीजें continue रहेगी. अगर आप repeal करते हो तो सब कुछ वहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया. So hereby we end up with this particular provisions of you can say the mock test series of October, the very first for November 2020 examinations. And friends, I can say that we very specifically discussed the case study based, integrated case study based questions because they are very, very, very important to understand. Moreover, I focused more on interpretation of statutes. जहाँ जहाँ interpretation की बात आई, interpretation एक ऐसी चीज थी जो revision से याद रहती है. तो मैं आपको पूरे के पूरे lectures के उस part को revise करूँगा. So see you soon in some another lecture. Till then, stay home, stay safe, keep on studying. Thank you. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.